There we are, friends, in the morning at the hotel, leaving now for a ride in Haridwar. It's about 6:45 a.m. Need to catch up the traffic a bit. Wanted to ride a little early, but it didn't work out. But yes, अभी हम हरिद्वार में राइड के लिए निकला हूँ. ये राइड मेरा 600 BRM राइड के बाद का पहला राइड है, क्योंकि पैर में थोड़ा इंजरी होने की वजह से I could not take up the ride. So now I'm going to take up this ride to check my injury level as well as short nature to comfortably go and return back. Firstly, I need to cross the road, and then let me take myself through a little bit detouring on the wrong side. Okay, let me cross the road and then figure out on the right side of the road how to move. Chalo. Need to be very careful in India, especially with the kind of traffic we encounter here. Yes, let me be a little more careful. This is a highway on which I am, and this takes me to Dehradun if I catch hold and move on this direction. Okay, all set, let's cross the road. Okay. Good morning once again. Let's start the ride. La 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 la. Okay. Seems my legs are working. I'm not finding it so much difficult to ride. Friends, usually long rides के बाद कुछ ना कुछ ऐसे small wear and tear होता है. But again, you need to understand कि ये होता क्यों है. Sometimes very basically it's related to your bike fit as well. So better fit yourself properly into the bike so that none of your muscles extend themselves or stretch themselves a lot more than required, especially during the long rides. So my basic advice based out of my experience is have the bike fit done. That's very important. A. B is if you have been doing stretching exercise or jogging and running, that helps a lot. Otherwise, only by cycling and then going for long rides, it's still susceptible to be having such problems somewhere down the line. So it's a combination of stretch out and then ride practice, all weather practice and stuff. Okay.
ब्लॉग फ्रेंडली बनाने के लिए सीखूँगा, समझूँगा, उसको इफ़ेक्टिव बनाने की और कोशिश करूँगा। यहाँ एक मंदिर है जिसके लिए सभी आए हैं। वाह, look at that man, such a spectacular view। ऐसे लगता है पता नहीं नेचर के अंदर इतनी डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं जो इंसान कभी सोच नहीं पाता है। लुक एट दैट, आई विल शो यू ऑन द अदर साइड, यू विल फील आई डोंट नो व्हाट। ये देखो, ऑन द सरफेस ऑफ रिवर यू कैन सी दैट मिस्ट और फॉग जस्ट रेजिंग फ्रॉम द सरफेस। कितना अच्छा दिख रहा है। लुक एट दैट, दूर शिव मूर्ति है, सामने जस्ट वो फॉग रेज कर रहा है। अरे वाह, मज़ा आ गया। दैट्स द व्यू मैन। ओके, लेट्स गो फर्दर एंड एक्सप्लोर व्हाट वी गॉट टू सी टुडे। चलिए चलते हैं, कोशिश करेंगे अगर कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन आए तो मिलें, बात करें। Talk to people or any sadhu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.
down. You know, riding in places like these will always take you to such routes where you keep going down and up and wow. Okay, let's see this. There we go, Canal Side Road. लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आया था बाई कार तो थोड़ी सी आगे जाने के बाद वहाँ पर एकदम ख़राब रोड सा आता है जो वाकई में साइकिल के लिए फ्रेंडली नहीं है। देखते हैं अगर उसका बाईपास कुछ निकाल पाते हैं तो। Wow. Good morning friends, again now I'm in Haridwar. Yes, it's a spectacular morning ride here और मैं यहाँ पर आया हूँ जस्ट एक वीडियो शूट करने के लिए
to talk to you about more about cycling, cycle accessories, and what needs to be taken care for long rides or leisure rides and stuff like that. And I've started putting few of my videos which I recorded during the BRM sessions. I would request you to watch that, the route and the timing and the kind of fatigue you can watch on a face, and that's how one has to go through. So more towards discussing and talking about the ride challenges and the benefits of riding and the madness of being on cycle. Maybe it's गर्मी, सर्दी, बारिश या कुछ भी, आप ज़िंदगी में भी ऐसे ही चलते जाते हो, तो साइकिलिंग भी ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंटेशन है. तो मेरा पर्पस यही है कि इस चीज़ को हम और अच्छे से कवर करें, सो दैट आप सभी के लिए एक इनपुट गाइड मिले और आप सभी यूज़ कर सकें उस इंफॉर्मेशन को और किसी के अपने एक्सपीरियंस को और अपने साइकिलिंग एक्सपीडिशन को या पैशन को और जान दें और उसको आगे लेकर के बढ़ें. और हम ऐसे ही वीडियोस में आगे मिलते रहेंगे. अब मैं और आगे जा रहा हूँ अनदर 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस के लिए, जो जंगल एरिया है. फिर वहाँ से वापस लौटूंगा तो करीब 20-25-30 किलोमीटर हो चुके होंगे. और आज शाम को निकलना है देहरादून. वहाँ क्या वीडियो कल निकाल के दिखाऊंगा, कल बताऊंगा वीडियो बना के, where I'm going to meet few senior citizens, veteran cyclists who are going to ride to Leh, all from Dehradun to Leh and back to Dehradun in just about 30 days. And mind me, they are over 60 and they are going to do this. एक मैडम भी हैं, उनसे मिलने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, क्योंकि मैंने उनके बारे में, शायद वही हैं जिनके बारे में मैंने सुना था, यूट्यूब में देखा था कि उन्होंने साइकिलिंग पैशन बहुत लेट स्टार्ट किया, एक्वायर किया, बट बहुत अच्छे से हस्बैंड एंड वाइफ मिलके साइकिल राइड करते हैं. सो कल उम्मीद है कि कई लोगों से मिलूँगा और उनके साथ राइड करने का मुझे मौका भी मिलेगा. सो keep watching my videos and then keep telling me what needs to be covered. If any specific places you want to cover before you make a ride, I can be your Reiki rider. I can take you before you go there and then show you how those places are, and then we can once again go for a serious ride. So friends, all for you, open, ज़िंदगी को embrace करते हुए हर जगह जाने की इच्छा रखने वाला The Wanderer Ajay. Keep watching. Hi friends, again, what we need to look at before preparing or riding for BRM rides is thorough practice. If your attempt is beyond 300 kilometers, 300, 400, 600 and 1000 or 1200 kilometers, you really need to do a lot of practice, and do not attempt these kind of rides just to say to yourself that okay, let me go and ride and then see what happens and then I'll learn. Before that, I'll tell you what you need to do is go for practice rides of 50 kilometers and then bring it up to 100 kilometers every week, once in a week on Sundays or Saturdays, and then you need to move towards night riding practices, and then you need to tune yourself to handle your sleep pattern so that you do not get drowsy while you're riding. This time when I was riding 600 kilometers, I didn't sleep even for 10 minutes. So what happened was I was solo riding somewhere around 2:30 or 3 in the morning, and then I started feeling drowsy, and then I had to stop riding and then take a nap on the highway, national highway between Bangalore to Mumbai, and then sleep on the footpath. So don't do that, it's not that safe.
but what you need to do is take a nap of 2 hours sleep if you're riding 600 kilometers, and then go for it. So those kind of practices you need to keep doing so that your body acclimatizes along with all the situation, and then you can keep your consistent riding on. Otherwise, what challenge you may get or you will get is you will feel tired, and then your legs feel tired, and then you can't move forward, and then you will feel like giving it up. Giving up is not the choice, but sometimes you may have to give it up consciously. But I always urge you to do something which is practice oriented, and then you will see that you will successfully cross those hurdles. The more you cross each and every hurdle or the milestone of 100, 200, and then thereafter 300, 400, then you will always see that yes, now you're gearing up for 600 kilometers. The day you finish 600 kilometers, you are titled as super engineer, and you'll always remain a super engineer. It's just not for the calendar year or Audax year, but yes, you can claim more titles by doing more BRM rides and then call yourself as SR1, SR2, SR3. There are people whom I've met who are like SR8, SR10 and that stuff. So those are the test machines who can say to you that okay, you need to bring up your body and mind together to make this happen. And then when you're riding, when your body and mind says no you can't, that's the time when you need to bring up yourself and say to hell with you body, to hell with your mind, I'm gonna do it, whatever it costs and whatever it happens. But yes, medical emergencies are always something which you need to take care. But friends, keep riding, keep up this passion, and cycling is a great sport. फिर मिलते रहेंगे और more videos and more shots coming forward, and look forward for your comments. Please subscribe, comment and like my videos. The Wanderer Ajay. This is Mahadev Mandir here. Okay, took a pit stop and then now I'm going to leave from this place. Amazing, spectacular place here. Okay, now off from the mandir, वापस जाना है रोड पे and then back to the hotel. Found a small temple, Mahadev temple, while I was riding, and then got into it. नीचे जाकर के मंदिर में दर्शन किया. काफ़ी अच्छा मंदिर, छोटा सा है, काफ़ी भव्य सा लगा. A nice place to be in. Okay, now trying to finish the ride. अब थोड़ा सा और जाएंगे और 1.5 किलोमीटर, and then you turn back to the hotel. फिर मिलते हैं होटल में. अब GoPro का बैटरी डाउन हो रहा है. Need to cover up. Alright, see you friends, sign offing. Okay. Look at this. Stopping hereby for a cup of tea. चाय मिलेगी क्या? एक चाय बना दीजिए. मैगी कुछ नहीं चाहिए फिलहाल. We're here for a break, for a cup of tea. A short break and then फिर वापस चलते हैं. Catch you friends again.
ही खराब है प्रभु। अब क्या करूँ मैं, भीख तो मांगना ही पड़ेगा, पेट का गुजारा है प्रभु। तो आप वैसे क्या करते थे, कहाँ से हैं आप? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था मैं पहले, अब बीच में मेरा ये पैर खराब हो गया। अच्छा, क्या हो गया पैर को? पैरालिसिस हो गया ये। पैरालिसिस? अरे अच्छा। अब मेरा तो कोई इलाज कराने वाला भी नहीं है, करने वाला नहीं है। अच्छा। बाल बच्चे कुछ नहीं है पर मैं यहाँ पर बस क्या करूँ, अस्पताल जा नहीं सकता। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ जी, यह जो पुलिस चौकी है अच्छा। उसके सामने एक पुराना मकान है, वहाँ पर रहता हूँ। आप ही का मकान है या? नहीं, ये विभाग का है। विभाग का? तो आप ऐसे ही उसमें रह रहे हैं? क्या बस अब मेरे साथ मेरी बुढ़िया है एक, अच्छा। वो रोटी पानी बना देती है। अच्छा। बस यही काम है बस यहाँ पर बैठने का कारण यही है, उसकी मर्जी उसकी चूल्हा है, क्या करे, पेट है पर वो करेगा। सब उसी की माया है। उसी की माया है। महादेव। महादेव जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है मुकुंदीलाल। मुकुंदीलाल? हाँ जी। अच्छा जी। आप यहीं उत्तराखंड के ही रहने मैं वाले? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और रुद्रप्रयाग आप जा रखे होंगे? कहाँ? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग? हाँ जी। रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। वो ऊपर वो बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर रहता है रुद्रप्रयाग। अच्छा। बाकी वहाँ का रहने वाला हूँ। बद्रीनाथ केदारनाथ? मेरा लड़का रहता था पहले। हाँ। नौकरी में, ये पावर हाउस में बिजली का। अच्छा। अब वो जो एक्सपायर हो गया 2004 में। अरे कैसे? अब वो बिजली पावर हाउस में चोट आ गई उसको। अरे 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 अरे। इन लोगों ने अपना गाड़ी घोड़ा तैयार करा। हाँ। अब बंगाली अस्पताल में भर्ती करा, हार्डवार में। वहाँ तक मेरी टांग सही थी और वो 2004 में वहीं बंगाली अस्पताल में मर चुका। ओहो। मैं धक्का खा रहा हूँ। अब उसकी बहू को नौकरी मिली। अच्छा। और जब उसने मेरा इलाज नहीं कराया, अभी तक वो श्रीनगर ट्रांसफर करा दिया यहाँ। अच्छा। अब उसने मेरे को छोड़ दिया। बस छोड़ दिया या अभी कांटेक्ट में है? वो आपके लिए कुछ करती हैं? वो कुछ भी नहीं करता। मैंने जो 2000 रुपये आता है मेरे खाते में उसकी तनख्वाह में से। अच्छा। अब 2000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर मांगना पड़ रहा नहीं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 70 साल की उम्र। 70 से ऊपर है? हाँ 70 60 77। 77? हाँ 3 साल से गए 80 पर जाने की। बस ये उम्र है मेरी पर। क्या करें पर वो बस किस्मत की बात है। सब कुछ प्रकृति से है। जी। जो आया है उसी में जाना है। जाना है। अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। अच्छा। आप मांग रहे हैं ऐसे मत सोचिए। ये जो आपके तक पहुंचता है ना, वो अलग अलग रास्ते से पहुंचा रहा है। आप मत सोचिए कि आपको मांगना पड़ रहा है। आप सिर्फ उसके सामने हैं, वो जो कर रहा है वो आपके लिए देख पा रहा सारे हूँ साहब। बाकी जो जिसका कोई नहीं है उसका वही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। आप अपना भी ख्याल रखिए और माताजी का भी ख्याल रखिए। दानी दाताओं का भला होगा पर जो भला है वो करेगा। जय हो। जय हो। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे इसी रास्ते में कभी। अच्छी बात है। आपका आशीर्वाद चाहिए दोनों पर। आशीर्वाद उसका है, ऊपर वाले का। सब कुछ देने वाला वही है पर आपकी झोली में भी वही डालेगा। उम्मीद मैं भी करता हूँ कि एक दिन उससे मिलूंगा। बिल्कुल मिलना पड़ेगा। और आप जैसों के जरिए मैं उससे मिल रहा हूँ। जी। बहुत धन्यवाद है। मिल सकते हैं पर जय हो भगवान। फिर मिलूंगा, आऊँगा इधर ही। हरिओम। मेरा नाम अजय है, आप याद रखना। मैं फिर आऊँगा आप ही से मिलने के लिए। यहीं पिलूँगा। अगर यहाँ नहीं तो मैं वहाँ आके पूछूँगा आपके लिए। ठीक है जी। पुलिस चौकी पर पूछ लेना आप। मुकुंदीलाल का है। मुकुंदीलाल महादेव। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय। देखो दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि हमारा दुख कितना ज़्यादा है, बट अभी मैं मुकुंदीलाल जी से मिला जो रोड पे बैठे हैं, जिनके पैर में प्रॉब्लम है। वो
उस पैर से ज़्यादा कुछ अपने काम के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वो मांग के अपना गुजारा चला रहे हैं। तो मुझसे वो जो बन पड़ा मैंने उनके लिए किया मदद नहीं कहूँगा, ये उन्हीं का पैसा था, उनका उतना था, पता नहीं शायद मेरे पूर्व जन्म में या कभी मैंने उनसे लिया था, जो मैंने आज उनको लौटा दिया। आज अच्छा है अगर किसी के काम में आ पाता। बट हम सब सोचते रहते हैं कि हमें बहुत दर्द है, हमारे प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, बट इनका सोचिए 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। मुकुंदलाल जी का बेटा 2004 में एक्सपायर हो गया, पावर हाउस में काम कर रहा था। मेरे पिताजी भी पावर हाउस में काम करते थे। तो उसके बाद से वो अपना और अपनी वाइफ का ख्याल रख रहे हैं। 2000 रुपये उनको अपनी बहू के पेमेंट से मिलता है, जो किसी ज़्यादा मदद नहीं होता 2000 रुपये से आज के ज़माने में। और शायद वो अपना लाइफ देख रही हैं, जो भी है, जैसे भी सिचुएशंस हैं, बट ये खुद पे निर्भर है। और ये रोड पे बैठे हैं मांगने के लिए। मैंने ये कहा कि आप मांग रहे मत सोचिए, जो है उसी का है, ऊपर वाले का दिया हुआ, उसी के थ्रू इन तक पहुंचता है, या हमारे थ्रू पहुंचता है। इन्हीं का पैसा इन्हीं के लिए वापस। अच्छा लगा किसी से मिलके। दोस्तों, ऐसे ही हम सब मिलके एक कम्युनिटी ऐसे बनाए, एक सोच ही है। शंभो 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 महादेवा, शंभो शंभो। ओम नमः शिवाय। I can see the hotel. It's getting late. It's about 9:30 in the morning. Need to wrap up things now, load my bike into the car, and then take shower and go to the work, and then finish the day and drive towards Dehradun. I will keep you updated and probably try to shoot some good videos on en route to Dehradun. We can share more, dear friends and my cycling riding friends. And okay, to my hotel endpoint, and this is my car. My car always helping me to take my bike everywhere. Thank you. Signing off, friends. We'll catch you all once again very soon, quickly, on the next video. Have a nice day. Keep riding. Bye.